Hey guys, I'm back with another video and I'm really obsessed with this. I never thought I can make a very good big pillow from a t-shirt. So guys, if you have a oversized t-shirt, then you can make a really nice pillow for yourself. तो guys आप देख सकते हो इसके लिए मेरे पास ये ओवरसाइज टी शर्ट है और मैं इसे यूज़ करूँगी। तो गाइस ये टी शर्ट मुझे बहुत ही चीप में मिल गई थी, इसलिए मैंने ख़रीद के ले आया। And you can make your, if you have an old t-shirt then you can definitely use it guys. तो आप एक बहुत ही चीप में एक किंग साइज पिलो आप घर पे ही बना सकते हो। तो या कीप वॉचिंग गाइस एंड दिस इज सुपर फन टू मेक। Once you're done stitching the open side, just beat it guys. I say beat it. You have to do this continuously until the current fits perfectly in this pillow. तो आपको ये यही करना है। आप चाहो तो इसे फ्लोर पे भी मतलब ये पटक सकते हो। एंड दिस इज़ इट गाइस। ये बहुत ही, आई टोल्ड यू, आई नेवर थॉट दिस विल कम रियली गुड। मुझे तो बहुत खुशी हुई आज के आई मेड ए पिलो फॉर माई सेल्फ, तो वो भी एक टी शर्ट से। एंड बहुत ही, यानी कि मुझे ये 150 रुपये में फुल मिल गया है, क्योंकि मुझे टी शर्ट बहुत ही चीप में मिल गई थी और ये नायलॉन कॉटन भी। तो ये 150 या 200 खर्च, यू कैन जस्ट मेक ए पिलो फ्रॉम 200 रुपीज़ ओनली। सो दिस इज़ सो गुड एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक ए कवर फॉर इट। सो ऐसे बना दिया, तो इसके लिए अब मैं एक कवर भी बना लूँगी एंड माई पिलो इज़ रेडी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ, सो इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सो ये डू दिस कंटिन्यूसली गाइस, ये आपको करना है ताकि कॉटन अच्छे से बैठ जाए पिलो के अंदर। तो देख सकते हो ये फाइनल लुक है एंड इट केम्स रियली रियली ऑसम, सॉफ्ट एंड द pillow is really big, so it's definitely going to be so comfortable. Thank you guys.